तिने तुला चुकीचं सांगितलंय. हॉरिझॉन्टल फेसबुक म्हणजे सगळ्यांना वाकडं दिसणार ते. नाही तसं नाही दिसत ते नाही. कारण मी केलं एकदा. ती काय तिने केलं असेल माहिती का? स्पेसिफिकली सांगितलं लँडस्केप. थांब जरा कर. झालं इट्स लाईव्ह या लाईव्ह लाईव्ह आहेस. या जास्ती ब्राईट झालं. ठीक आहे इट्स गुड चलो लेट्स जस्ट चेक इट. हॅलो लाव काहीतरी लाव. Everyone, waiting for all of you to come. Welcome SGR Knowledge Foundation of the GH Soni College, Nagpur. Hello. हंसते गाते दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. स्टार्ट करायचं. 5 मिनिट. Hi everyone, this is Dr. Rahul Joshi. We are all set and let the comments appear. Mrinal, I'm waiting for your comments. Hope everything is fine. Just comment that everything is fine, so I know everything is fine. I'm here at my friend Ameya Naik studio at Malabar Hill, Mumbai, one of the topmost musicians of our industry and also a composer, arranger, a rhythmist, a promoter. Thank you, Sunil. काय रे बाबा? काय नाही जरा ॲम्बियन्स. चहा छान होता. Thanks a ton for the tea. Hi, Mrinal. I should have taken this number down. Hello, Mrinal? Mrinal? Hello? Hello, Mrinal? Range problem. फुल आहे. Hello, Mrinal? हॅलो मृणाल. मृणाल, राहुल दादा बोलतोय. हॅलो. काय करायचं आता? नको. जस्ट टेल हर दॅट यू आर अमेय राहुल's नाही फुल आहे रेंज. बोलू शकतो. लाव ना जरा. Hi everyone, on the behalf of SGR Knowledge Foundation, welcome. मृणाल, राहुल बोलतोय.
कॅमेरा हॉरिझॉन्टल तेच बोललो मी. कॅमेरा हॉरिझॉन्टल आहे. तुम्ही हॉरिझॉन्टल सांगितलेलं. कळलं म्हणजे व्हर्टिकल पाहिजे कॅमेरा. ठीक आहे. नाही बट यू ओके ओके म्हणजे व्हर्टिकल पाहिजे कॅमेरा. मैं कैमरा नहीं यू सेड कैमरा शुड बी हॉरिजॉन्टल सो कैमरा इज हॉरिजॉन्टल. ओके बट व्हाट? ठीक है जस्ट सी आई जस्ट चेंज इट राइट नाउ जस्ट सी. हॉरिझॉन्टल नाही तर व्हर्टिकल आहे. ठीक है वील जस्ट सी जस्ट बरं म्हणजे चेंज करतोय रोटेट करतोय आता. We'll talk about it. I'm rotating it. काढून ते पर असं उलट लाव. नाही one sec. We'll do it ना. Don't worry. थांब तू फोन धर. तेच बोललो. Yeah. कर. या आता बघ. मृणाल आता बघ. मृणाल this is the only two. See this is the lands. This is a portrait mode. What we did व्हर्टिकल पोर्ट्रेट. हम आधी आता केलं होतं लँडस्केप. त्याच्या आधी लँडस्केप होता. या एनीवे नाही एनीवे आई स्टार्ट ओके या चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. फोनचा व्हॉल्यूम फुल ठेव. फुल आहे बघ आधी हे काय चेपलं गेलं माझ्या हातून ते बघ. फोनचा व्हॉल्यूम फुल पाहिजे. फुल आहे. मी आता केलं ते फुल. ते फुल ते तू ऍडजस्ट कर. कुठे असते बघ. चलो झालं. Ladies and gentlemen, on behalf of the SGR Knowledge Foundation, GH Raisoni Group of Colleges, I am Dr. Rahul Joshi, welcoming you all for this unique program, Music for Stress Management, Music for Entertainment, and Music also for Inner Spiritual Growth. दोस्तों, हमारे शरीर में 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं और इस 7 आध्यात्मिक चक्रों को हम 7 सुरों से उद्युत कर सकते हैं. ये जो हमारा संगीत है वो बहुत ही प्यारा होता है दोस्तों. 7 सुरों से और श्रुतियों से हम न जाने क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं. वाह. गिव मी डी एंड हे लाओ जरा थोड़ा मेक इट हे करना. सारे मग मरे प म प नी 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 म प म प नी 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 सा द नी सा द नी सा रे ग म रे सा द नी प नी म प ग म नी 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 सा द नी प नी म प ग दोस्तों, let's be all happy in life. Today, with the help of music, we are going to stimulate our 7 chakras of the body and also explore 7 different emotions. The first emotion is the emotion of happiness. There was one crow who was very unhappy. There's one crow who was very unhappy with his black color. Because he saw a dove who was with white color, he goes flying to the dove and says that you must be so happy with your beautiful white coat, because I'm so unhappy with my black color. The dove says, I used to be happy once upon a time. I used to be very happy, smiling, cheerful. But once I saw this parrot with 2 colors, I started becoming unhappy and I lost my sleep.
Both of them fly towards a parrot. The parrot also is unhappy. The parrot is unhappy because he sees a peacock with multiple colors. All of them then fly to a peacock. And the peacock is not available anywhere in Nagpur, anywhere in Mumbai, Pune, anywhere. He is at last found in a zoo, cramped up in one room, where people are throwing some money and stones to make him dance. The peacock is so unhappy. He's crying and he says, I wish I was the crow where no one would have caught me. People would have fed me. Pitru Pakshila ta majas aste sagri. So friends, never be unhappy with your life. Be happy always. Be happy always. Let's sing this first song of the program, and this is here for you. Open karna. Chotila bolo na. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले ओ, 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 उड़ले उड़ले ओ। Everyone clap with me, guys, and be happy all the time. Never think a lot. Never ever get depressed. Never ever get low. चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ओ, 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 उड़ले उड़ले ओ। Come on, get clap with me. I want some comments from, come on, Knowledge Foundation, some comments from you. हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो अरे किसने जाना। When Alexander the Great expired, he had kept his hand outside this way of his coffin. Ashoka Rao, do you know the reason? The reason he said that everything what I'm not taking anything along with me. I'm going to leave. He must have earned crores and crores of rupees. Everything he earned, but he kept his hand this way, saying that I'm not going to get anything in my life. Is going to go away. So friends, be happy, smile all the time. It's very sad news that we don't have Sushant Singh Rathod along with us. Rajput along with us. God knows what must have happened. Such a young man with great career. Friends, you all are from this college, from a great career. Never ever commit such a thing, friends. It may be some most depressing thing, but still life moves on and we have to fight. May God, may we give Shanti to his departed soul, but it's such a huge loss. Had he just, sung some songs, had he attended this program, he would have changed his mind. Friends, now let's go on to the next one. Next one is...
So friends, now we go on to the next one. The next one is about enthusiasm. So the first concept was about happiness. The next one is of enthusiasm. It's very important to be enthusiastic. Let us sing this song full of enthusiasm. I just love this song. This is for the second chakra, which talks about enthusiasm. This is for all the romantic guys here. Dedicating this song to my uncle and auntie who are sitting here. Ashok, Kaka and Chitra Kaka. Thank you, Supriya. Thank you, Savita. Thank you, Devika. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Enthusiasm, friends. We must be enthusiastic all the time. हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए. मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम ये लाती है. मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. Guys, let's be romantic. Let's be enthusiastic. Every time should be enthusiasm. कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में. ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं. मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. जीवन मीठी प्यास ये कहती हो. Say with me, everyone. Satish Bhai, Nanda Ben. पल पल दिल के पास तुम रहती हो. My teacher of school who taught me in 7th, 8th, 9th and 10th, my school teacher, Sunila Navalkar madam is here. Man, dedicating all these songs to you. You have been a great teacher, a very enthusiastic teacher. And those days where, teaching was not a profession for earning money, but teaching was a profession to make students. You have really given us a lot, ma'am. This is तुम्हारा चरण स्पर्श करता हूँ आपके और ये गाने आपके लिए पेश करता हूँ.
So friends, say with me together, I will be enthusiastic. I'll not spend a single time in boredom. Let's be enthusiastic all the time. One more song which will get enthusiasm. An amazing song, friends, just for you. I need him. Nuestro cerebro sentía como no lo había hecho nunca. Satish Bhai, Jai Shri Krishna. Raj, thank you. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. Call me, everyone. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. Everyone, all the beautiful ladies here. Come on, come with me, guys. हो ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को. ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को. प्यार से कसने को, बाहों में फंसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. The guitar, please, friends. हो ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए. ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए. सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. So friends, what do we learn? We learn that we have to be enthusiastic all the time. When you drive, look here around, look at the trees, look at the Gulmohar tree which is blooming, look at the Bougainvillea tree which is blooming, look at the Ashok trees, how straight they grow. Look, वडाच्या झाडाकडे बघा, वडाच्या पारंब्या बघा. We don't have time to stand and stare. We must sing. We must enjoy every moment of our life, friends. Today I take this occasion to reach to all my youngsters here that friends, life is precious. We get this life after many years, many, as in our philosophy they said, many centuries. This is not to be wasted, friends. This is not to commit something
wrong, friends. We may have a lot of stresses. Look at the migrant laborers who were here for 3 months, 4 months. They didn't have food to eat. Did they commit suicide? They went walking home, friends. You must have that resolve and never ever be so depressed that you want to end your life. What about your mother? Think about your father. Think about your spouse. Think about your brothers and friends. What will they think, friends? We have to fight. We have to be enthusiastic. And music teaches us all. तो दोस्तों हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं. सारे पग मरे नि सा. 7 सुर हमारे 7 आध्यात्मिक चक्रों को उद्युत करते हैं और हमारे पूरे शरीर में संतुलन ले आते हैं. जोशी दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल जोशी एक वैद्य की चिकित्सक हूं. आई एम अ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ. द होल डे आई सी पेशेंट्स एंड नाइट आई डू माय रियाज. एंड आई एम बीइंग होम्योपैथ, I am a healing medical practitioner, so we believe in holistic health. It's not just giving medicine to your headache, to your head for headache, to your back for backache, but we understand the case in total and give the medicines to the body. And music is also a good medicine. We want to create harmony within our body, friends, with the help of music, with the help of homeopathy. And when you sing, you are also stimulating your chakras of the body. The third concept is the concept of willpower. And this song which I love the most is Allah Ke Bande. You know, this an amazing song I'm going to sing for you. Let's be strong, friends. Let's be strong. Are you enjoying, friends? I need some nice messages so that I be engaged with you. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया. ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया. टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया. लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया. गिरता हुआ जो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. मानवगणे से नमस्कार. What a time we had in Amravati. होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा. होके अपने पर ही तो होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा. गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. Hi Bhuma, thank you. टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा. टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा. बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा. जो भी हो कल फिर आएगा.
Thank you, Preeti Madam. I had the best time in Jalgaon. You invited me twice there. Thank you, Pintu Singh. Thank you, Devika. Thank you, Mandavgade sir. And I need to thank again my very dear friend Mrinal Karthik Naik and Dr. Mrinal Naik, and husband name is Karthik. So thank you so much for the kind invitation. Hope you are enjoying. So now we are friends. We have done 3 concepts till now. Number 1 is being happy. Number 2 is being enthusiastic. And number 3 is about having full willpower. एक willpower का यानी you know that problems will come, but let's solve the problems. Let's forget the problems sometimes. एक बहुत ही प्यारा गाना रफी साहब का मैं गा रहा हूँ आपके लिए. And this song is here. Hi Mia. After some time I will do some jamming with you. हो. I'm at my friend Ameya Naik studio, one of the most prestigious studio here in Mumbai. He's a percussionist, a rhythmist and a composer. I've sung many of his songs which he has composed as well. आइए दोस्तों ये प्यारा गाना आपके लिए. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था. बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा. So friends, the first chakra is to do with the skin problems. And if we are unhappy all the time, these type of people tend to get more of skin problems. The second chakra is to do with more of prostate problems and to do with more of the problems of the sexual problems, which is the second chakra. The third chakra is to do with the abdominal problem, with the lack of appetite. So people who come with the profile of not having the willpower, people who are always depressed that I will not be able to do it, they'll end up getting these stomach problems, appetite problems. And we have so many patients, friends, which I treat, which I heal by just singing Rag Yaman to them, apart from giving the other homeopathic medicines. So friends, music has a healing power. So whenever you feel depressed, you sing. Whenever you feel depressed, whenever you feel lack of willpower, listen to empowering songs, and that will itself heal you. Now we go on to the fourth chakra, the healing chakra. But now I request my very dear friend Ameya to give me a chord of C sharp madhyam or F sharp. Malkos gato mi.
Friends, everyone, do this mudra. Do this mudra and keep it on your heart. Everyone. And imagine a green colored petal in your heart and forgive everyone who has sort of troubled you. Forgive everyone who has bothered you, who has, really been bad to you. That's what you think. Let's forgive them and let's send them good energies right now, because healing occurs with energies. Close your eyes and imagine a green colored flower, a green colored petal in your heart. Mudra ऐसी होगी. Forgive everyone. Send positive energies to all those people who have bothered you. Let your heart be full of love, compassion, and not hatred, not anger, not remorse. Because that is the cause of heart attacks, of cholesterol, of blockages. Remove everything and let your heart be full of only love for everyone. थोड़ा आवाज वाढव ना. बराच आहे, खूप लावड आहे. Okay. Hari Om. So friends, let's now be forgiving. The fourth chakra is the heart chakra, where we forgive everyone. It's for our own heart. There are so many cases which don't improve, and despite giving good medications, patients don't improve. And when we take a deeper history, we realize that there is something which is stopping that recovery. And that is keeping something in the mind and the heart. So once you remove everything from your heart, you just fill your heart with love and compassion, your health comes back to you. So please forgive people, not for that person, but also for your good health. Thank you, Sonali Kumar, my very dear friend. And we also have the great legendary Vishnu Manohar ji. Vishnu ji, I'm really fortunate that you are here. We enjoy your Nagpur. Whenever I come to Nagpur,
we visit your restaurant there in open air and have thali. It's extraordinary. Khub maja aate. And my mom is your big fan, Vishnu ji. Thank you for your kind comments and need your blessings all the time. We have with us Ujwala Kaikini Gokarna, who is a great rhythmist and a fantastic lady. Thank you, teacher. Thank you, Sonali Kumar. Thank you, Devika. अब ये गाना गाते हैं बहुत ही प्यारा, जो पूरे गमों को, पूरे सभी प्रॉब्लम को दूर करता है. With me. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. लल्ला लल्ला ला, लल्ला लल्ला ला, ला 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 ला. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का. कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. There's a suggestion that the mic is become smaller. Just tell Mia to thoda वाढवायला थोडासा, because one gentleman Anil Mapsekar has commented that we can enjoy the talk more if you would like the mic is weak. Friends, hope you're enjoying and hope the voice is reaching you very well, friends. We have finished the 4 chakras. Now we want the fifth one, which is the Vishuddha chakra, the chakra for truth, the chakra for character. दोस्तों, भगवान ने हमें कंठ यहां पे दिया है क्योंकि because the mind is here and the heart is here. Yeah, better. The mind is here and the heart is here. We have been given the throat here because the mind is here, the heart is here, everything is in sync. हम जो कहेंगे वो सोच के कहेंगे और हम जो कहेंगे वो दिल में डुबो के कहेंगे. इसलिए our कंठ should be what? Like Prabhu Ramachandra. What does Prabhu Ramachandra say? He always says the truth and he always says something which will make people happy, which will please people. So, friends, our Vani, God has given beautiful creatures all over the world. They are dogs, they are cats, they are parrots, everything. But why are we special? Why are we special children of God?
The reason being is we can talk, we can communicate, verbal communication, which is not there in any other animals. Let's use this verbal communication in such a way कि लोगों के मन को शांति मिले, लोगों के आत्मा को शांति मिले. Let everything coming from our voice be always to make people happy and जन कल्याण के लिए. Some problem with the audio volume is too weak. Okay, now I think better. Let's sing this wonderful song, friends. आइए गाना सुनते हैं. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. Everyone clap with me, guys. मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. Friends, we have to be sensitive. कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, यही जो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. Friends, the great Baba Saheb Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar used to say that what is the use of knowledge? What is the use of knowledge if that knowledge is not of any use to people? That's why, friends, इस गाने में साहिर साहब ने लिखा है कि what is the use of knowledge if that knowledge is not to heal people? Friends, we have to heal people with our good voice, with our good deeds, and touch life of people. So, Dr. Baba Saheb Ambedkar says that important is to be compassionate rather than knowledgeable. Knowledge is not important, friends. Knowledge क्या book पढ़ने से मिलता है, but compassion book पढ़ने से नहीं मिलता. We must have compassion for everyone, for every smallest creature. And that's why when you go to meet big people, you should ask the watchman also, अरे कैसे हो? कौन गांव से आए हो? सब ठीक है ना भैया? अरे काय बरोबर सगळं बरोबर आहे की नाही?
तुझं गाव कोणतं? If we say such things, then we are humans, friends. We are not robots, we are humans. We have to be compassionate in life and we have to be full of truth and character. मेरे साथ कहिए सत्यमेव जयते. This is the thyroid gland, and this thyroid gland can be stimulated with the fifth chakra, and the Bij mantra is hum. Sing with me. Hum, 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 hum. Now we go on to the sixth chakra, which is the Agya chakra, which stands for focus. Mudra ऐसी होगी. Let's do this mudra, friends, together. हाथ असे ठेवायचे. Do this way and this way. That's right, friend. This is the mudra of the Agya chakra. जहां नारियां बिंदी लगाती है वहां पर ऊर्जा स्थान है. The pituitary gland is present there, and that's a gland of focus. That's a gland from where you can visualize your future. Yes, friends, visualize your future happening, and everything will happen accordingly, because that's called as positive visualization. Here, visualize. I'm singing this rag zog for you. Listen and focus. Imagine a flame here. Sagama pagama pani pamaga. Sagama paga gama pani pamaga ni ga sa. Let's be focused. What is your focus in life? Tell me. What is your focus? Unless you have concrete focus, your achievement, 2 years, 3 years, 5 years, how will we grow in life? Let us have targets, friends. And the biggest target is to have a target of good health. That today we can do 50 push-ups, tomorrow 100, 150, 200, and let it be increase more. Let's have focus and targets. Thank you, Bhuma. Thank you so much. Bhuma Iyer is my very dear friend and we have done a lot of programs together for many big corporate companies. आइए दोस्तों गाना गाते हैं. This song I've sung in the airport of Baku, Azerbaijan. Azerbaijan is a country which was a part of Russia first, and it still has Russian influence. And when we reached in the taxi wala asked, "You are from India? You are from India? Raj Kapoor." And he started singing, "Mera juta hai Japani and awara hu." So this song is a wonderful song, friends. This song is a very fun song, but it talks more about motivation. Clap with me, guys. Clap with me. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी. Everybody, guys.
पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। The circle of life, friends, sometimes up, sometimes down, but the strong will survive, the focus will survive. ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। I request Amir to come. So thank you. We have with us Sunil Raisoni sir. Sir, what a pleasure and privilege to get your message, and thank you for calling. Let me tell you, friends, that Raisoni group of institutions is something very special to me. Raisoni colleges, institutions are very special to me. I have gone to Ahmednagar, I have gone to Pune, I have gone to Nagpur many times, I have gone to Amravati twice, and I have gone to Jalgaon twice. And all your faculties, your teachers are extremely close to me. And it was because of my very friend, dear friend, my sister, Mrinal Nayak, Dr. Mrinal Nayak, is that I am here today. Thank you again. And the last song which I want to sing today with the spiritual connection in F sharp is... So now, friends, we have finished 6 concepts. The first one was being happy. Let's say, everyone, Kaka, Kaku, Happy. I am happy. Say with me, I am happy. I am happy. The second is Enthusiasm. being enthusiastic. Say with me, I am enthusiastic. Yes, I am enthusiastic. I'll do everything. मराठीत म्हणतो आम्ही खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी. Let's have... माईक वर बोल. Yeah, ते येत नाही त्याच्यावर. The third one is willpower. I will do it. Yes, I will do it. Come on, say with me, I will do it. I will do it. The fourth is about compassion, about love. Spread love everywhere. Just spread love. Don't spread hatred. We accept all religions, all faiths, and the biggest religion and faith is a religion of humanity. You know, even Mother Teresa said that the biggest religion is religion of humanity. When Jesus Christ was crucified, he did not talk bad about the people who crucified him. He said, "Oh God, forgive them because they don't know what they are doing." Fifth is character. And character is the basic essence. You have to be full of character, truthful to your profession, to your core area. The great Sachin Tendulkar says that he still practices for 4 to 5 hours cricket every day. That is a resolve, that is character. 6 is focus, and 7th is spiritual connection. Friends, all these have medical connotations also. The first one is with the skin. The second one is the prostate and the the third one is with the digestion. The fourth one is the heart. Fifth one is the thyroid. Sixth one is the entire body, and 7th one is for sleep, for calmness and overall well-being. So friends, I am Dr. Rahul Joshi. I am a homeopath. I am the honorary homeopath of the Governor of Maharashtra Excellency, the Mumbai Police, and I practice in Walkeshwar, Mumbai, and in Chandni Road, Mumbai, and also have clinics and attachments in many hospitals. And my motto of life is to create a society which is healthy, mentally healthy, physically healthy, and spiritually healthy. You can reach me on my website rahuljoshi.com,
and my YouTube handle, Dr. Rahul Joshi. There are a lot of videos, inspirational videos, and please do see. We have with us my friend Satish Bhai Shah, the chairman of Juhu Club, and he has organized my program on the Monsoon Melodies, which is open for all on my Facebook page on 28th of June, that is 2 weeks from now, with lady singer and with musicians. So do come for this program. I invite you. I need to thank Mrunal again, and I need to thank my friend Ameya Naik of Ameya Studio. Now we move on to the last concept, the concept of 7 chakra. What is it? एक बार गुरु नानक जी धर्म का प्रचार करते करते पहुंच गए द होली सिटी ऑफ मक्का और वहां पे थके हुए होते हैं. सो ही सिट्स दिस वे विद द फीट इन फ्रंट. ही इज वेरी टायर्ड. ही इज वेरी टायर्ड. हिज फीट आर फेसिंग द मस्जिद. द मौलवी कम्स डाउन विद एंगर. लाहौल बिला कुव्वत, हाउ डेयर you sit with your feet in front of the masjid. Nanak Sahab says, I'm sorry, it's my mistake, it was not intentional. He changes his position. He says this way, and when he sits this way, the masjid is seen in this direction as well. He says sorry. He changes direction. He sits this way, and when he sits this way, Ameya, a masjid is seen in front here as well. He changes his direction everywhere, and everywhere a masjid is seen. Can you believe the God's grace? The Maulvi is surprised. He says that I'm very sorry. आप खुदा के नेक बंदे मालूम होते हो, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए. To that Nanak ji smiles and says, मैं तो एक खुदा का मामूली बंदा हूं, मगर तुम मुझे ऐसी जगह बता दो जहां पर खुदा न हो. तुम मुझे ऐसी जगह बता दो जहां पर खुदा ना हो. Friends, God is everywhere. God is in the small kittens. God is there in the wind. God is there in the monsoon. God is there in the music. God is there everywhere, friends. Let us now sing this beautiful Sufi number, and I'm privileged that my friend Ameya is on the chords right now. ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या मोइनुद्दीन, या ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा. ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर तूने है सवारी, बेकसों की तकदीर तूने है सवारी. तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया. तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया. तू है ही दलवली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा, चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया. ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा. मेरे पीर का सदका, मेरे पीर का सदका है, मेरे पीर का
ये कोरोना बीमारी, टली ये कोरोना बीमारी, छाया है खुमार तेरा, जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे ख्वाजा, तेरे कदमों को मेरे रहनुमा नहीं छोड़ना गारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा जी 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 ख्वाजा जी। और एक फरमाइश है, लास्ट 1 मिनट डी में मैं भैरवी गाऊंगा। मांडवगढ़े सर नमस्कार, मैम को नमस्कार कहो ना, डी देना मला डी। नंदा जी थैंक यू। मी आधी नका माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरी, आहे भीवरे चातिरी, आहे भीवरे चातिरी, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पाप भंगा, करीतसे पाप भंगा, पाप भंगा, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरी, एका जनार्दनी शरण, जनार्दनी शरण, जनार्दनी शरण, जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, काढे माहेरची आठवण, आठवण, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरी, आहे भीवरे चातिरी, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, ओ भारत हमको जान से प्यारा है। Thank you again, Rai Soni Group of Institutions. Thank you again, the SGF Foundation, for inviting me here. Thank you, everyone, and thank you, Mrinal, to invite me here. We'll keep it on for some time so that your comments pour in, and I'm really thankful to you, and my heart is full of love and compassion for all you spending your time. Thank you again, my audience here who made the program alive here, my Kaka, Kaki, Ashok Kaka, and Chitra Kaki. Thank you. खूप छान राहुल, मी आपण पाहिजे just enjoyed it. आणि लाईव्ह कॉर्ड्सची मजा येते अजून. आता गोइंग टू प्रोग्राम हिअर ओनली नाउ. ही इज गिव्हिंग ऑडिटोरियम फील. मस्त. Thank you, Nawalkar ma'am, my teacher from school, one of the best teachers I've ever had in my life. Thank you. Yeah, काढू हे plug काय थांब थांब, हा काढ काढ, बंद आहे सिस्टम. because I don't want it to create a jerk.